Hello, good morning, students. How are you? How is your study going on? आइए इस लेसन 5 क्वालिटी क्लास 7 इंग्लिश के दूसरे वीडियो में हम लेसन से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करें। ये लेसन इसके लेखक हैं जॉन गाल्सवर्दी। दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय एसके जैन पीजीटी इंग्लिश JNV कटनी MP फॉर यू। Now, very short questions of 1 mark. First, read the extract below and answer the questions. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. I went in very much disturbed. अब आप एक बार स्वयं भी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हु डज हिम रेफर टू इन दीज लाइन्स? हु वेंट इन? पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द above extract which means the same as beautifully. If you read this passage, you will find out. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. So splendidly, this word you will notice, and this is the word which means the same as beautifully. Who went in? Who went in? If you see the paragraph in the textbook, you will find that Mr. Gessler's brother went in. What does him refer to in these lines? A week later, passing the little street, I thought I would go and tell him. Tell him यानी उनको बताऊंगा। तो कौन है वो? मिस्टर गैसलर। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर गैसलर। Now second, read the extract and answer the questions. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. इस पैराग्राफ को आप फिर से पढ़िए एक बार, उसके बाद में आंसर दीजिए। Ill-omened boots refer to ill-omened boots. Ill-omened boots refers to the boots which cracked and which the author complained about. The word I refer to, I, who is I here? I explained the circumstance. I means the narrator, the author of this lesson. The word his refers to who is his. His face and voice made so deep an impression. So this is Mr. Gessler. Mark the correct answer. Mr. Gessler was an American, a German, Russian. Who is the answer? What is the answer of this question? So you will find out that Mr. Gessler was a German. Mr. Gessler was a German. Mr. Gessler was called a perfect artist because what he made? First, he made beautiful paintings. Second, he made beautiful dresses. Third, he made beautiful shoes or boots. The answer is he made beautiful boots. Mr. Gessler used to live with his neighbor, his brother, his son. तो what is the correct answer? आप जानते हैं इसका correct answer है his brother. You will tick here. Now, some questions, short answer type. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? Mr. Gessler के बारे में author की क्या opinion थी, क्या राय थी, क्या धारणा थी? Answer. The author was very impressed with Mr. Gessler. He liked the boots made only on order, and those boots perfectly fitted the customers. Their boots had the best materials and lasted long. He found the work mysterious and wonderful. तो author
मिस्टर गेस्लर से बहुत प्रभावित थे और उनके बनाए जूतों को पसंद करते थे। मिस्टर गेस्लर उतने ही जूते बनाते थे जितना ऑर्डर दिया जाता था बनाने का, और वो जूते कस्टमर्स को फिट होते थे। ये जूते बेस्ट मटेरियल से बनाए जाते थे और लंबा समय चलते थे, और उनको लेखक को मिस्टर गेस्लर का कार्य मिस्टीरियस और वंडरफुल लगता था। सो सेकंड क्वेश्चन, why did the author visit the shop so infrequently? यानी कि इतने कम क्यों जाते थे लेखक मिस्टर गेस्लर की दुकान में? तो आंसर, द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय गेस्लर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग। तो गेस्लर ब्रदर्स द्वारा बनाए गए जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे, इसलिए लेखक उनकी दुकान पे इनफ्रिक्वेंटली यानी कम जाते थे। What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? तो आथर ने एक जोड़ी जूते के बारे में जो टिप्पणी की, उसका मिस्टर गेस्लर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, मिस्टर गेस्लर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल। पहले तो मिस्टर गेस्लर को लेखक की टिप्पणी पे विश्वास ही नहीं हुआ। He argued that the author might have got them wet, कि आथर ने वो जूते गीले कर लिए होंगे, कहीं बारिश में पहन लिया होगा, पानी पड़ गया होगा जूतों पे। He was shocked, और उनको मिस्टर गेस्लर को बहुत शौक लगा, झटका लगा, विश्वास नहीं हुआ। He told the author that he will either repair them. तो लेखक से मिस्टर गेस्लर ने कहा कि उनको वह सुधार देंगे, रिपेयर कर देंगे, और नहीं तो उनका पैसा अगले वाले जूतों के बिल में एडजस्ट कर देंगे। What was Mr. Gessler's complaint about big firms? Answer, Mr. Gessler complained that big firms didn't value the money of the customers. Mr. Gessler की ये शिकायत थी बिग फर्म से कि बिग फर्म्स कस्टमर के पैसे की कीमत नहीं करती, और they were capturing the market from advertisement and not from the quality of their work. तो बिग फर्म्स को बहुत सारे कस्टमर मिल रहे हैं, डिमांड है उनके जूतों की, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए कस्टमर्स को आकर्षित कर लेते हैं, ना कि अपने कार्य की या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के द्वारा। और मिस्टर गेस्लर को काम नहीं मिलता था, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फर्म्स डे बाय डे यानी दिन ब दिन उनके कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करती थी, और इस कारण से मिस्टर गेस्लर के काम या ऑर्डर कम होते जा रहे थे। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर ऑफ बूट्स? डिड ही रियली नीड देम? आंसर, द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गेस्लर हु वाज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स। ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स टू हेल्प द बूट मेकर। नो, ही डिडंट रियली नीड देम। कि इतने जूते की तुरंत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह मिस्टर गेस्लर की मदद करना चाहते थे, इस कारण से खरीद लिए। Long answer questions for you. You can solve these questions yourself. Describe Mr. Gessler's shop. I had left a man of 60. I came back to one of 75. Who said these words and why? Why, according to the new tenant, was Mr. Gessler a failure in business? What was Gessler's bitterness with big firms? Where was Mr. Gessler's shop situated? What was the certain distinction of his shop? Justify the title of the story, Quality. Short answer question. Who was Mr. Gessler? Mr. Gessler was a bootmaker. From where did he come? You have to answer this question. London, small street. Where did he live and with whom? He lived in a small street in London. He was living with his brother. How did the author come to know Mr. Gessler? The author did not need to go his shop very often. Why? What did the author say to Mr. Gessler once about a certain pair of boots? How did Mr. Gessler die? Who took over the shop after Mr. Gessler's death? So students, keep learning, keep watching these videos, and also comment and answer these questions in your comments. Thanks a lot.